अलैकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो मैटर की डेफिनेशन में पढ़ी थी, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possesses mass and the presence of which can be felt by one or more of five senses। यानी कोई चीज़ हम इसके लिए कंडीशन है, मतलब कोई चीज़ इसको हम मैटर बोले तभी मैटर बोलेंगे जब इसके लिए कंडीशन ये है, इसका कुछ मास होना चाहिए। इट कंटेन सम अमाउंट ऑफ मास, नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड इज it must occupy some space, yani it should have volume, because space occupied by a substance is called volume, and the presence of which can be felt by one or more of five senses। ये हमने ऐड किया था। जो डेफिनेशन हमने लोअर क्लास में पढ़ी थी, उसको हमने ये ऐड किया था, द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय वन और more of five senses। This is the definition of this matter। Classification हमने पढ़ा था, we can classify matter on the basis of physical properties and chemical properties। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं जो मैटर है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं, यानी उसको हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है, all matter which is in the universe is made up of particles। these particles are called, वो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, atoms and molecules। यानी पहले आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं particle nature of matter, यानी matter is made up of particles। this is the first nature of matter। यानी जब हम physical nature पढ़ते हैं, पहला पॉइंट यही है इसका, matter is particulate in nature, यानी matter is made up of particles। ठीक, काफ़ी देर तक ये है, जब हम मैटर के बारे में पढ़ते थे, इसके लिए दो नज़रिया थे। क्या नज़रिया थे? यानी आधे जो साइंटिस्ट्स हैं, कुछ साइंटिस्ट्स वो बिलीव यही करते थे, जो मैटर है इट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। जैसे ये बोर्ड है, ये हमें दिखता है इट इज़ कंटिन्यूस, यानी ग्लास शीट हम लेंगे, ये हमें दिखता है कंटिन्यूस, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। यानी जब हम ग्लास शीट लेंगे ऐसे, ठीक, इट अपियर्स एज कंटिन्यूस, बट व्हेन वी थ्रो इट ऑन द फ्लोर इट गेट्स broken down, it breaks into small pieces। These further each piece can be when it is beaten with the help of hammer, it is a powder of this is formed powder। Each powder particle is it indicates that, it shows that it is particulate in nature। Particulate in nature, it is not continuous। Similarly, all the matter which is in the universe is made up of particles। Even also the water, when we look at the water, it appears that it is continuous, but it is made up of molecules, particles। It is particulate in nature, matter is not continuous, matter is not continuous, it is particulate, it is made up of particles, like जो सैंड है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं एक दीवार बनाते हैं, मकान बनाने, हाउस बनाने में काम आते हैं। ठीक, जो हाउस हैं वो हमें लगता है क्या ये इट इज़ कंटिन्यूस, बट it is made up of sand, particles। Similarly, all matter is made up of particles, it is not continuous। Even our body, it is particulate in nature,
everything in this universe is made up of particles. All matter in this universe is made up of small particles. It's not continuous. It's particulate in nature. यानी ऐसे याद रखना है, everything around us is made up of small particles. For example, our earth है, and these oceans हैं, mountains हैं, sun, moon, all planets, stars, and this board, books, everything is made up of particles. These particles which make up all the matter around us are either atoms or molecules. जो हम आगे पढ़ेंगे, atoms or molecules. Atoms or molecules are the smallest particles of matter. या आप ऐसे भी मतलब याद रखोगे, इवन स्मॉल जो हम लेंगे, वाटर ड्रॉप लेंगे, रेन ड्रॉप लेंगे, it is found that this small drop of water contains as many as 10 raised to power 21 particles of water. In a raindrop, a small raindrop, there are as many as 10 power 21 particles of water in it. Yani 1 followed by 21 zeros. It means that these particles are extremely small. They are so small that we cannot see them, even with a high powerful microscope. Even without seeing them, we have certain evidences which tell us all things that is the matter is made up of tiny particles. इसके लिए evidences हैं. Also, these particles are continuously in motion. These particles are continuously motion. इसके लिए evidence यही है. Brownian motion हम पढ़ने जा रहे हैं. Brownian motion या diffusion of gases, उसमें हम जानेंगे these particles are motion. ठीक, ये हो गया first. यानी everything यानी all matter is made up of particles. That is called particulate nature of matter. Matter is not continuous. It is made up of particles. This is the first point when we study the physical nature of matter. Yani matter is made up of particles. Now, how small these particles are? मैंने जो बोला पहले हमने बोला था, अगर हम rain drop लेंगे, small rain drop, ठीक, it contains as many as 10 raised to power 21 particles. It means that these particles are extremely small. So second जो नेचर है पढ़ने जा रहे हैं हम, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कितने ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. हमने पहले पढ़ा है इससे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. अब हमें जानना है कितने ये स्मॉल होते हैं. इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे. हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, एक कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट. इसके जो क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. 10 ml वाटर में टेस्ट ट्यूब मिलेंगे, 10 ml उसमें डिज़ोल्व करेंगे. इसका जो कलर है वो बनेगा पर्पल. इट बिकम्स पर्पल. ये डार्क होगा, काफ़ी कलर्ड होगा. ठीक, अब हम दूसरा जो लेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, इसमें 9 ml वाटर लेंगे, 9 ml वाटर. और इस जो हमने पहले बनाया था पर्पल सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, यहाँ से हम लेंगे 1 ml एंड वी ड्रॉप इट इन दिस, वी पुट इट इन दिस क्रिस्टल. इट बिकम्स 10 ml दिस. मगर जो कलर होगा, इससे कलर होगा ये लाइट होगा, ये वेरी डार्क होगा, ये लाइट होगा, ये वाला लाइट होगा, लाइट पर्पल. ठीक, अगर हम तीसरा लेंगे हम टेस्ट ट्यूब, इसमें 9 ml वाटर लेंगे, इससे हम 1 ml ऐड करेंगे इसमें, तो ये बनेगा 10 ml. जो उसका इस कलर होगा वो होगा इससे कम होगा, यानी ये होगा, इट बिकम्स लाइटर पर्पल. ठीक, चौथा हम लेंगे टेस्ट ट्यूब, 9 ml वाटर लेंगे, इसमें
take 9 ml water and put 1 ml of this solution into this test tube. It becomes colored, but its color will be lightest as compared to these. सो इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे यही प्रोसेस हम देखेंगे। जो इसका जो कलर है वो डिसअपियर जल्द डिसअपियर नहीं होगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू कलर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यही है, अगर हम इसको रिपीट करेंगे 3, 4, 5, 6 टाइम्स, जो इसका सोल्यूशन है इट विल नॉट डिसअपियर ऑल टुगेदर, दो इट बिकम्स लाइटर, यानी इसकी इंटेंसिटी पहले ज़्यादा होगी, इसके लिए उसके बाद कम होगी। इसकी इंटेंसिटी जो कलर की है वो कम होगी विद ईच डाइल्यूशन। दस हम यही कंक्लूजन इसका यहाँ से निकालेंगे। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जो हमने पहले यहाँ क्रिस्टल लिया था, इट मस्ट कंटेन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल। वही पार्टिकल जो है वही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वही डिवाइड होते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। इसका मतलब यही है, तभी जाके जो ये है कलर है इसका कम होता जा रहा है। From this experiment we conclude that जो matter is extremely small. Matter is made up of extremely small particles which we cannot see with our naked eyes, even under a powerful microscope. What we actually see is an aggregate of particles. ये point important है, we see aggregate of particles, tiny particles. सो इस वीडियो में हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें पढ़ा है हमने मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज पार्टिकुलर नेचर। Matter contains particles. These particles are called atoms or molecules. How small are these particles? These small are very extremely small. Even how small are these? It is believed that a small raindrop contains as many as 10 raised to power 21 particles of water. 21 particles of water. So these particles are extremely small. We cannot see them with even under a powerful microscope. This is about the physical nature of matter.